Wow, wow, you guys. Thank you to who made that video. I will get back to that later, who's made the video for sure, and give you the definite credits. Thank you so much for that amazing video and that short journey, because there's so much in this man's journey. There is so much to talk about. There's so much to do. Now, I'm so honored to have with me today, guys. Like, wow, so honored. This is the consummate gentleman. He is a role model, an ideal husband. He definitely isn't anyone's Saman. He definitely isn't a worst half. He is, in fact, a better half. And I think he's the biggest upset of this season. Please give all your love to this man and support Rubina, of course. But please welcome to my show, Addie's Royalties, Abhinav Shukla. Welcome, welcome, welcome. A big hug to everyone, people who have supported me, people who have loved me. I'm just inundated with appreciation and with messages, and there's so much of love people have showered on me. I never expected, this much, love and appreciation. It's just like overwhelming. So I'm just absorbing this too much. So thank you all. There's Thanks so for much everything. love for you in the world right now. There's so That's, much love. And that's what we and you need. know, honestly, and you have it. You have 100% love, 110% love for me, from so many of people that I know, and so many people that are online. And you Hmm. guys are organically loved by not just India but the world. And I say you guys because you were a team and you still are a team. But you're one's in the house now, one's out. But Yeah. um मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी इतनी कमाल रही है घर के अंदर। सब कहते हैं कि आप सब सेब खाते हो और संतरे छीलते हो, पराठे बनाते हो, पर घर के अंदर और क्या है करने के लिए? वही तो है। अगर आप लड़ते नहीं हो तो और क्या करोगे? अभी ये कंप्लेन था कि आपने खुद बोला था घर के अंदर कि आप आलसी थे और आप थोड़ा लेजी हो गए थे। ऐसा आपने क्यों बोला कि व्हाई डू यू फील कि आप आलसी थे? So, I've realized one thing about myself. I don't know, it's because I'm a little spiritual or I'm in connect with the nature that I try to take things like little easy. Like I take it, slow. I take it very organically. So मुझे लगता है कि at times I am not proactive. So just जोश और जिस जुनून से uh, you have to get after a few things. I feel sometimes, not always, कि कभी कभी वो होता है. तो वो इस शो के बीच में भी मुझे लगा there was a phase of I think around 2-3 weeks where I started feeling that I have to be like a little more proactive. So that's it, and I overcame it. So in the end, I was like more than proactive. आई थिंक आपकी जो जर्नी रही है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप पहले, हाँ, आप कह सकते हो कि आप स्लो स्टार्टर थे, पर Yes, क्योंकि आप स्लो स्टार्टर थे, आपने पीक, जो आपका पीक था वो correct. देरी से आया था। पर आई थिंक ऐसे गेम में अगर आप पीक एंड पे करते हो ना, तो आप बेहतर रहते हो। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? Absolutely, it's pure common sense. If you're running a marathon, you have to maintain a pace, and then in the end, if somebody is, there's a lead, अगर किसी के साथ है, you try to, just, finish that lead or just. तो वैसा ही तो common sense है show में. If there's a show which is so long, especially Big Boss, which goes on like for like at least 4 months, so it's a natural thing that in the end you should be more proactive, you should be more involved. And for me, it happened naturally because I had never seen Big Boss before. I had seen like few feeds here and there, and I have a couple of friends who have done Big Boss, like Shilpa, Apurva. So all I knew about Big Boss was that it's a brilliant format, in one line, strangers under one roof and trying to solve their own problems. So that was all that was required for me to know. Uh, People came in with a lot of preconceived ideas and strategies like stand lena hai, mudda dhoondna hai. So and if you come prepared to fight, to create issues, uh, to to find out muddas and issues to fight, I think you are killing the basic essence of a reality show, which is that you have to be yourself. You know,
So I knew I have to be myself, and I knew I'm not fit. This is not my arena at all. I would be a great, misfit. I might not even last more than maybe 3 4 weeks. But I knew one thing about myself, that I can adapt, and I'm a survivor. I've done a show, in which I've survived, Yes. and so that spirit to survive was always there in this show as well, and which actually Hmm. happened. So जाने से पहले मैंने बोला था आपने ऑब्जर्व. सर्वाइव नहीं किया, आपने सर्वाइव सिर्फ नहीं किया, आपने यू थ्राइव्ड. एंड आई थिंक के बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने पत्नी के पल्लू के साथ आप भी आगे आगे चलते गए, बट आई डोंट एग्री विद दिस. मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अगर आप ऐसे कोई कंटेस्टेंट थे जो कुछ कर नहीं रहे थे, या फिर आप ऐसे थे कि सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से आगे बढ़ रहे थे, पर फिर कोई आपको नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहा था? फिर आपको कोई मतलब लाइक इतनी सारी चीजें होती है घर के अंदर, अगर कोई बंदा कुछ कर नहीं रहा और आपने कोई किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाया, वो आपको वोट आउट करेंगे, पर आपको वोट नहीं कर रहे थे और फिर ब्लेम भी आपको भी दे रहे थे, वहां पर फिर भी आएंगे. पर लेट्स टॉक अबाउट जस्ट आपकी एक ग्रुप था जब आप पहले गए थे घर के अंदर, क्योंकि आपका आपका 130 दिन का जो जर्नी है बहुत लंबा चौड़ा है. तो आई वांट टू टॉक अबाउट हर एक चीज, क्योंकि आपके फैंस यहाँ पे बहुत सारे हैं और हर एक चीज पूछते हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो जैस्मिन और रुबीना और आपका ये एक एक ग्रुप, अनसेड ग्रुप बन चुका था एक टाइम पे, और आप बहुत क्लोज हो गए थे जैस्मिन के साथ, और वो शुरुआत में सबको अच्छा लगता था. इनफैक्ट जैस्मिन का जो व्यवहार था घर के अंदर वो बहुत अच्छा था. शी वेरी स्वीट, वेरी नाइस पर्सन, कमिंग अक्रॉस वेरी नाइसली. एंड फिर वो एक फ्लिप आया जब उनको बोला गया कि आप पपेट हो. उसके बाद उनका थोड़ा वो नजरिया गेम के और आप लोगों के और, मतलब आप यानी कि रुबीना और आपके और अलग हो गया था. आपको उसके बारे में क्या कहना है? व्हाट इज द थिंग दैट चेंज जैस्मिन्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन यू गाइस? I think what happened was the game changer was, I think, once Ali came. जब Ali game में आया शो में, उसके बाद चीजें बदली. और फिर जब अली और राहुल का बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, फिर और चीजें बदली. अब एग्जैक्टली कैसे क्या बातें हुई वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक दैट वाज वन टर्निंग पॉइंट. And then the second turning point was her elimination, and the third turning point is when she came back lately. So और yeah. हमने देखा है कि जब वो वापस आई, शी केम बैक. आई मीन घर के बाहर आपने शायद नहीं देखा होगा, देखा भी होगा मुझे नहीं पता, पर जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने देखा है, जैस्मिन ने जब बाहर आई थी उसने बहुत कुछ रुबीना के बारे में बोला था जो बहुत गलत था और बहुत अंडर द बेल्ट था. लेट्स नॉट टॉक अबाउट टू मच अबाउट दैट. बट उसने जो जो किया घर के बाहर वो सबके लिए दिख रहा है. मतलब वी कैन सी हर इंटरव्यूज, वी सी ऑल ऑफ दैट. बट But when she came back in the house, she came back with a vendetta. It felt कि एक मतलब उसको अपनी गेम को साफ करना था, अपने जो भी उसके ऊपर लांछन लगे थे वो अपनी गेम के लिए वापस आई, खास करके ना करके वो अली की गेम के लिए नहीं आई. It feels like that. What do you think? Honestly, I just when she came, uske agle din I was out, and all I can say about Jasmine is that I don't know her. Long story short, I don't know. पर अभिनव, आपके में आवाज में मैं सुन रहा हूँ कि यू आर लिटिल बिट अपसेट अबाउट दैट. इट्स नॉट लाइक because I can see कि आपने एक इन्वेस्टमेंट किया था फ्रेंडशिप का, और आपकी तरफ से वो प्योर था. I can feel that there was definitely a friendship from your side, and she's definitely gone off on a tangent and she's not coming back. I can see that. Like, that's what I'm feeling. Maybe I'm wrong, but I feel that you're a little bit upset about the fact that Jasmine is now behaving the way she is. What are you upset about it, or how do you feel? Well, that's what I will say, Andy. मतलब ये बहुत बार पूछा गया मुझसे, और हर इंसान यही पूछ रहा है about Jasmine, and I think the best answer I can give to anyone is that I don't actually know her. वो आप अच्छी तरह उसको समझ नहीं पाए, और So उसकी I जो won't say पर्सनालिटीज निकल के आ रही हैं. I won't say who's Jasmine. No, I would say I don't know Jasmine. That's pretty sad. That's a pretty sad comment, because that in itself is a very big comment. Anyway, let's move on from Jasmine. So then उसके बाद बहुत सारे घर के अंदर आए हैं, challenges आए थे, challenges के साथ
लेट्स इन फैक्ट टॉक अबाउट जिसके साथ आपकी शायद पहले अनबन हुई थी, एजाज खान के साथ ज्यादा आपकी पहले होती थी, क्योंकि वो रुबीना के ऊपर बहुत सारी जैसे कहते हैं बिग बॉस की लैंग्वेज में चढ़ जाते थे बिग बॉस। एंड हमने बहुत बार देखा है कि बिना वजह रुबीना के ऊपर एजाज बहुत कुछ बोलता था और बदतमीजियां करता था, और फिर वो मतलब it's a slow journey, क्योंकि the first time he started shouting at her, I think you stepped in, and you stepped in a lot of the times for Rubina, like आपने ऐसे बार बार किया, और इसके ऊपर आपको बोला भी गया कि आप पहले जब आप नहीं करते थे तो आपको बोला जाता था फिर आप रुबीना की तरफदारी नहीं कर रहे, अगर आप कर रहे थे फिर आपको बोला जाता था आप क्यों बीच में पड़ते हो। तो मतलब there was a bit of a there's a bit of a confusion कि do they want you to stick by your wife or they don't want you to stick by So I'll tell you what, Big Boss घर में everybody has a problem for a solution. मैं वहां पे गया था एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, सो आई न्यू इट। मैं अगर बोलूंगा नहीं तब उनको प्रॉब्लम होगी, बोलूंगा तब प्रॉब्लम होगी, रुबीना के मुद्दों में घुसूंगा तब प्रॉब्लम होगी, नहीं घुसूंगा तो बोलेंगे ये अपनी वाइफ का नहीं है। सो आई वाज एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट बिकॉज it's a stressful environment. Everybody will say things to hurt you, to shake you, to break your spirit. लेकिन वही तो है, Big Boss in one line is how well you take humiliation from your contestants. Wow. So if you can take that, if you have the patience, if nothing breaks you, you go ahead. If you break down, you do stupid things, you just get like washed away. So yeah, that's what I understood about Big Boss. पर एजाज की जो बदतमीजी थी, जो उन्होंने बार बार बदतमीजियां की है घर के अंदर, शायद आपके साथ ही नहीं सिर्फ पर लोगों के साथ वो बहुत बदतमीज रहे हैं, उनका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा है घर के अंदर, हमने देखा है। पर उनको कभी भी वीकेंड के वार पे उनको एक बार भी नहीं बोला गया कि आप बदतमीज हो, ऐसा क्यों है? ये सवाल तो मैं See, आप ऑनेस्टली जवाब दो। Come on, Abhinav, don't घूमो मत। No, I think what happens is when you set standards for yourself which are very high, people look up to you, people expect that you will maintain those standards. वो थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो डांट पड़ती है, लेकिन एक इंसान जिसने अपना स्टैंडर्ड वहां सेट ही नहीं किया है उसको क्या डांटोगे, because that's his baseline personality, वो ऐसा ही है। I remember in the first week, Ijaz said कोई भी अच्छा आदमी अच्छाई करके आज तक ये शो नहीं जीता है, and there was a winner sitting right across in the room, Gohar, and she said no wait, don't say that, मैं जीती हूँ show. So that day we had a big conflict between a winner who's already done a season, she's sitting there, and a guy who's just come 1 week into the show, and वो बोलते हैं कि अच्छाई से कोई नहीं जीता है। And I know Ijaz from outside, I knew him a little bit, I find him a very nice guy, so I was wondering इनको क्या हो गया है, ये क्या सोच के आए हैं इस शो में कि क्या करना है। So that's where the conflict is. But we started off, me especially, me, Rubina, हमारा जो छोटा सा गैंग बना था, we started as यार तमीज से बात करो लोगों से, when task होता है please don't get too physical, don't injure someone. So we started, हमको वो रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया कि ये तो वो नॉन वायलेंस गैंग टाइप हैं, इनको चीर फाड़ हम दिखाएंगे। So they kept mocking us for that, and surprisingly जो लोग मॉक करते थे वो सब चले गए, and few people from the non-violence gang reached till the end. So yeah, coming back सवाल पे कि वही जब तुम standards high set करते हो, when you claim यार कि मैं बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, मैं physical नहीं होऊंगा टास्क में, आप अपने लिए एक बहुत high standard set करते हो जो इस गेम में मेंटेन करना is very 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 difficult, और थोड़ा सा भी अगर उसमें ऊंच होती है तो डांट पड़ती है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। So if you have seen all the tasks which I played in Bigg Boss season, there was not a single person injured by me or mistreated by me in any task. So I understand this, but I think let's get back to a very important thing. ये tasks के बारे में अगर बोला जाए, या फिर मतलब जनरली रुबीना को हर वीकेंड के मतलब ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है चैट में, वीकेंड पे रुबीना को तो बैश करना ही था
बिना वजह ही बैश करना था, पर बश करना ही था। मतलब छोटी उंगली से लेके, मतलब अगर आपने सांस इस तरह लिया था तो ऐसे क्यों लिया था, अगर आपने आंखें को ऐसे झपका था तो इसका मतलब क्या था। तो हर टाइम के पे हमने देखा है कि रुबीना और अभिनव को, आपको बारीकी चीजों के लिए बहुत पकड़ा जाता था घर के अंदर, खास करके वीकेंड के ऊपर। इनफैक्ट जिस तरीके से आपको बोला जाता था कि बहुत बुरी तरीके से आपको बोला जाता था कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक बार्किंग एट यू। वेयरएज अगर किसी और को समझाना होता है, जैसे कि राखी को भी समझाना था, वो बहुत प्यार से आते थे। अली को चलो भाई भाई में निकाल देते थे। पर आप दोनों को इतना क्यों, मतलब ठीक है आपको भी बताना था, आप जैसे कह रहे हो कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, but do you think it's fair to treat people so differently? Man, And life's isn't the never same fair. rules apply to everybody? Okay, so life is not They- fair. Continue, Zoe. Life's never fair. So, and also I think वो again coming back to the same thing, I think जिनसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है उनको ज्यादा फीडबैक एडवाइस और डांटा भी जाता है. So maybe one point of view is they expect a lot, and जहाँ भी हम अपना स्टैंडर्ड्स जो हाई सेट किए वहाँ से चूकते हैं तो डांट पड़नी वो है. और anyway, but I see, honestly, I see that whatever bashing I got, whatever डांट जो पड़ी है, I just see it in a very positive way. For me उसमें चीजें थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो वो मैंने सीख ली. And see, Khan Saab is not a contestant on the show. He comes there to give you feedback. He tells you, these are ये दायरे हैं, इसमें चलो. It's up to you to accept it, to follow it. आप उसमें से कितना सीखते हो. That's the whole motive. So you cannot debate. He's not there for a debate with you. So that's why I used to listen to whatever he used to say, and then I used to think, हाँ ठीक है ये गलती है मेरी, ये चीजें I should do differently, और मैं वो करता था. एक दो दिन और करना पड़ा. वीकेंड के बाद हम हमेशा देखते थे कि आप रुबीना को ना समझाने की कोशिश करते थे। बहुत बार आप कितनी बार आपने कोशिश किया, और आपका दिल बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सही होता था, पर बहुत सारा बाहर ये अफला मचा हुआ था कि आप शायद रुबीना की गेम के लिए हानिकारक हो, क्योंकि आप उनको अपनी उनकी पूरी तरह से गेम नहीं खेलने देते, आप उनको रोक के रख रहे हैं। ऐसे इसके ऊपर क्या बात करेंगे आप? देखिए, गेम इज सेकेंडरी. फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज माय वाइफ, सो आई डोंट केयर अबाउट द गेम वेम. इतना है कि मेरी वाइफ है, मुझे जो सही लगेगा मैं उसको बोलूंगा, और वो हक मुझे भारत सरकार ने दी है. ठीक है. तो और क्या. तो जब भी कुछ मुझे लगता था कि इवन इफ नॉट फ्रॉम द शोज पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऐसे मुझे कुछ सही नहीं लगा तो मैं उसको बताता था. हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, बताने का तरीका थोड़ा इट वाज लिटिल अथॉरिटेटिव, यू कैन से, जो लोगों को लगा. बट दैट्स मी, दैट्स हाउ आई एम. व्हेन समथिंग, जब कुछ समथिंग नीड्स टू बी डन, व्हेन देयर इज अ मिशन गोइंग ऑन, देयर इज नो रूम फॉर मी फॉर कि ठीक है आराम से बैठ, 2 घंटे बैठ, आराम से बात करूंगा. If some job needs to be done, my feedback and my discussion is point on with the facts. अब उसको टोन को चाहे ऐसे समझा जाए कि गलत थी, वो मैं बाद में पैच अप कर लेता हूँ उस चीज का, लेकिन उस टाइम जरूरी होता है टू पुट द पॉइंट अक्रॉस, नहीं तो देन यू फॉरगेट एंड थिंग्स हैपन. पर आपके दैट्स ऊपर व्हाई. ये भी बहुत बार बोला गया बाहर से कि रुबीना ने आपको बोला है कि आप सपोर्टिव नहीं हो, क्योंकि जब उसको बस बताना है आपको कुछ भी, मतलब ये देखा गया है घर के अंदर. शी सेड दिस मेनी टाइम्स दैट you don't just listen, you just have to keep giving her the solution. And the thing is, because men are from Mars, women are from या Venus. It is a हाँ classic, बिल्कुल. it's a classic एंड example. यही, और वो मैंने कहने के बाद, हाँ मैंने इस शो में हाँ बोला बोलो भी बोलो. है कि एग्जैक्टली दिस इज द केस. व्हाट हैपेंड वाज, मेरी इंफॉर्मेशन पहले आई और प्यार बाद में आया. उसको प्यार पहले चाहिए था, इंफॉर्मेशन बाद में चाहिए थी. So that's exactly where the clash is. It's a classic example of men are from Mars and women are from Venus. So मैंने कितनी बार अपने रिव्यूज में बोला है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर वो एक दूसरे की बात सुन नहीं पा रहे इस वक्त, क्योंकि इट्स द रॉन्ग टाइम, इट्स अ टाइमिंग का इशू. correct, मतलब दोनों correct. हेड बटिंग कर रहे हैं, और बार बार ये बोला जाता था कि ओ माय गॉड ये दोनों लड़ रहे हैं, ऐसे हो जाएंगे. आई एम लाइक, वन सेकेंड, पीपल आर्ग्यू.
husband and wife bicker all the time. It's normal. There's nothing wrong with this Absolutely. picture. It's normal. And I just didn't understand why people are so like, what? So let's talk about one thing, okay, which is really important. कि, आपने कभी भी रुबीना को प्रपोज नहीं किया, बोला था घर घर के अंदर. Or I think lots of people want you to propose to. I'm not saying propose now, obviously, but I think maybe अगर आपको करना होगा, I'm just relaying the fans' messages. They're saying that please propose to her in some big amazing way when she comes out of the house, so that they No, can actually actually, I enjoy wanted. that. I had plans for Valentine's Day. I thought I would, do a set up in the living in the lawn area outside. और मैंने Oh. सोचा था कि I would use things from the house to make it like जो आज तक किसी ने हिस्ट्री में ना किया हो on such a big level. I was planning कि अली और निकी को बोलूँगा वो help करें मेरी, and then I would surprise Rubina, but वो अभी plan it cannot be executed. So Well, you are outside that the house and बाहर आप हैं, तो when she comes out तब धूमधाम से एक proposal कर लेना yeah. आपके खास करके fans के लिए. Yes. So we'll plan something, but I'm sure the moment she comes out, firstly, she will also be like little confused because there's so much happening in the outside world. There's so much of information suddenly that one tends to get a little confused. So मेरे साथ भी वो हो रहा है. So yeah. So I think she हाँ, might let's need talk about some. that. आप सबसे बड़ा upset हो, मतलब you're coming out of the house is like understandable. It's not correct. I'm just saying it straight up. The way you came out of the house, 7 जन को इतना बड़ा power Big Boss ने दिया. मुझे तो देख, मेरा मानना है और बहुत सारे आपके फैंस भी हैं कि नो, इट्स रॉन्ग इस मुकाम पे पहुंचना 130 दिन के बाद. आप 7 जन के हाथ में कैसे डाल सकते हो किसी की, मतलब गेम, पूरी गेम जो, और वो कह रहे थे कि वो ऑडियंस के प्रतिनिधि हैं. वो ऑडियंस के प्रतिनिधि नहीं है. जो ऑडियंस बाहर चाहती है वो नहीं था. So it's absolutely wrong on so many levels. You are not supposed to be out of the house. I saw you in top 3 minimum टॉप 3 में मैं आपको Yes. देख रहा था. पर हाँ, so what do you feel? You're out of the house. What the hell happened? So basically, first let me clear this. It's Big Boss. It's not democracy. So Big Boss is a game show which is based on successive eliminations. And जरूरी नहीं है कि हर elimination audience के voting के हिसाब से हो. Eliminations task के हिसाब से भी होती हैं. Eliminations कभी-कभी surprise होती हैं. So I don't have a problem with that because this is what I signed up for. What I felt bad was कि वो जो 6 लोग 3 लोग जिन्होंने मुझे वोट आउट किया, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो खुद शो में से नॉन डिजर्विंग होकर ऑडियंस ने उनको वोट आउट कर दिया था. सो वो एक ऐसे सदस्य का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं एट सच अ क्रिटिकल स्टेज, who has done a journey of 130 days non-stop. So I think yes, there lies the biggest irony, I can say. But yeah, क्या मतलब मुझे ज्यादा बुरा ये लगा कि जो मेरे फैंस थे बाहर उनको बुरा लगा कि मैं evict हो गया. लेकिन I had convinced myself long ago that any day could be the last day in the show. वो कहते हैं ना, the soldier becomes a real soldier in war when he accepts the fact that he's already dead. Then he starts functioning as a soldier. तो मैं तो उसके साथ गया था बिग बॉस में कि किसी भी दिन एलिमिनेट हो सकता हूँ. That's the reality. So but yeah. But it's unfortunate because we saw you in the top 2 maybe. I thought कि इस बार एक पति पत्नी, कितना बार बोला गया है घर के अंदर, पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी. अगर ऐसे होता इस बार, पहली बार बिग बॉस की हिस्ट्री में कि पति पत्नी टॉप 2 पे पहुंच जाते, क्या बात होती, क्या अलग बात होती. एक अलग ही अंदाज होता शो का कि वाह भाई, इतने अच्छे लोग जो दिल के इतने साफ हैं, अच्छी गेम के साथ आगे बढ़े. That could be such a good thing to show people, the world. These good role models are out there for our children. खास करके जो आजकल चल रहा है गली मोहल्ले में, नल्ला 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 नल्ला. I mean, is that what we want to show our children? Like अभी नल्ला तो बन गया है वर्ड, पूरे देश में बन गया है, पूरी दुनिया में बन गया है
क्या ये हम सिखाने आए हैं? ये चलो ठीक है, ये कलर्स का शो है, ये एक प्राइवेट शो है, ये गवर्नमेंटल नहीं है, समझ गए, पर इज दिस, देयर इज an aspect of responsibility to the audience. The audience is what's making the show, Abhinav. So if they don't if they disconnect with the audience, how will the show work? So this is my thinking behind it. But let's talk about now let's talk about your biggest dushman in the house. आपका दुश्मन जो था, जो है, पता नहीं, राहुल वैद्य के बारे में क्या बात करेंगे अभी, बताइए. What do you think about his game? What do you think about him as a person? Well, I think he would have been, he wouldn't have lasted more than 2 weeks or 3 weeks when he came, because he was also trying to understand कि क्या हो रहा है. So I believe that he came natural and he had an organic approach. लेकिन फिर कुछ वो बीच में हुए, वो जैस्मिन वाला टास्क बैग खींचने वाला, those incidents made him like very big in terms of people. ऐसा highlight था शो का that people discussed a lot about it. So I think that gave him a strong footing in the show. The guy can reason at times. उसमें थोड़ा लॉजिकल बात करने की एबिलिटी है. लेकिन मुझे वो इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे हमारी दोनों की बेसिक पर्सनालिटीज आर पोल्स अपार्ट. एंड I would never ever even gel well with him, because or even be like remotely friends, because हमारी personality ही नहीं match करती है. There's nothing in common to talk about. So yeah. Understood. पर राहुल की जो गेम के ऊपर बात करें, let's talk about his game. ठीक है, उनकी गेम बहुत साफ सुथरा. हाँ. Yes, his game basically he has been very insecure in the show. जो दिखा होगा, एंड इनफैक्ट मुझे बाहर आके पता चला कि उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी था जो बिग बॉस में दिखाया गया था, जिसमें जो वो कह रहा है उसके विजुअल्स पूरे उसके विपरीत थे. उसमें एक आयरनी दिख रही थी. सो इन द शो आई थिंक ही वाज वेरी इनसिक्योर एट लॉट मैनी टाइम्स. वो कैप्टेंसी टास्क में, इम्यूनिटी टास्क में दिखता था कि he used to come across as very needy. Of course you should play the task, लेकिन ऐसे नीडी तरीके से नहीं, एक कॉन्फिडेंट तरीके से. और वो जो उसका ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर है अदरवाइज, दैट इज टू कॉम्पनसेट दैट इनसिक्योरिटी व्हिच शोज इन द टास्क. सो दैट वाज हिज गेम. और वो खुद छोड़ के भी बीच में चला गया. ही लेफ्ट द शो एंड ही सेड लाइक अली होता तो नहीं छोड़ता. सो you come across as you are needy, and you at times you are weak. So I don't see his any game in it. I think his game is Ali, support of Ali. That is the game for him. And I feel he's organic. Like he's not faking. He's not putting up. जो है वो है basically. So that I give it to that guy, because if you're not putting up an act, you make mistakes, which he does. So yeah, that's his game. पर उसकी वो बोला गया है, आई थिंक वो बोला गया है बहुत बार कि मतलब प्रेस ने भी आपसे ही बात करी होगी कि उन्होंने रुबीना एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ के आगे निकला है. और नहीं तो उसकी पूरी गेम रुबीना को अटैक करना है. और उसने ये बार बार बोला भी है घर के अंदर के लोगों के साथ बैठ के उसने बात भी करी है कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके साथ लड़ो तो आप दिखोगे. ये उनकी गेम का अंदाज दिख रहा था और बात भी कर रहे थे. So what do you think about that game plan? Is it a good game plan? Well, that's not organic then. If you come prepared. हुआ क्या, जब राहुल बाहर गया था उसके बाद जब वापस आया, so there was a very sudden shift in his demeanor inside the house. So he started doing संचालन of fights. दो लोग लड़ रहे हैं, वो बीच में आ जाता था. अच्छा क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ, अच्छा एक काम करो, ऐसे कर लो. So when two people are arguing over something, there's no mediation required in that. तो वो आके एक संचालक बन गया immediately. जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया उसके बाद उसने उसको थोड़ा टोन डाउन किया. लेकिन I think what happened was when he went outside, somebody told him कि तू तभी दिखेगा जब तू लड़ाइयों के बीच में कूदेगा. So कुछ ना कुछ देखो, मुझे लगता है
जहां पे मुझे दिख रहा है वो बाहर आए हैं, उन्होंने थोड़ा सा अपना वो फेम देखा, अपना एक फॉलोइंग देखा, उसके बाद उन्होंने पीआर सेटअप किया। वो तो एक बहुत बड़ी बात होगी कि उन्होंने पीआर सेटअप किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर उन्होंने किया। फिर ऑब्वियसली उन्होंने पीआर सेटअप करके, एक टीम सेटअप करके, उसके बाद उनको कोई ना कोई एडवाइसेस मिले होंगे, तब जाके वो जब घर के अंदर आए हैं उनका गेम पूरी तरह से बदल गया, वो थोड़ा अलग हो गया। पर उन्होंने कोशिश भी की थी कि ज्यादातर वो वो ना करें जो अच्छा ना लगे, पर he got back to his own self anyway. Now talking about Ali coming back in the Right. house, जब अभी अली एरन की मतलब दोस्ती जो है, पूरी जय और वीरू की जो दोस्ती जोड़ी जो बनी है, तो उसके ऊपर आपका असली राय क्या है? What do you actually feel about their relationship? Is it 100% genuine? Well, you know what? I think had there been a task like what happened between Jasmine and Ali, एक task हुआ था जिसमें वो time करना था, time approximately time करना था और सवाल पूछने थे लोगों को. तो had a task like that happened between Rahul and Ali, where clearly पूछा जाता एक आदमी को sacrifice करना है दूसरे के लिए, उस दिन हमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता. लेकिन ऐसा कोई task आया ही नहीं. So even we don't know who would have sacrificed for whom. क्योंकि मुझे लगता है ये लोग इतना, कुछ लोग काफी बिग बॉस देख के आए थे और उन्होंने ये बोला था, जैसे मनु, आई थिंक मनु तो इज अ रिव्यूअर, सो मनु हैड सेड कि व्हेन देयर इज अ वेरी गुड स्ट्रांग रिलेशनशिप, दोस्ती का, तो एक मुकाम आता ही है शो में वेयर बिग बॉस विल टेस्ट who is going to sacrifice for who. But surprisingly that did not happen this season. अगर होता तो we would have seen like who makes the sacrifice, who makes the supreme sacrifice. उस दिन समझ The आ जाना था तो ठीक supreme है. sacrifice. Okay, so अली की एंट्री और फिर जाना और वापस आना, मतलब he's gone in and out of the house. बहुत बार ऐसे हुआ है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स घर के बाहर गए हैं, वापस आ गए हैं. इनफैक्ट लास्ट मिनट तक एजाज को भी बोल रहे हैं कि प्रॉक्सी डाला है, डेबोलिना को प्रॉक्सी डाला हुआ है. ये क्या सीन है? मतलब ये घर होटल कब बन गया? Like, do you think that's right in this kind of game that you can just let anyone in and out whenever? Vikas Gupta तो 4 बार आया है. मतलब what is that scene? I honestly, Andy, I'm not a follower of Big Boss. अभी भी I'm not following all the episodes. मैं कुछ देख रहा हूँ जहाँ पे रुबीना है. तो I have no clue that had it मतलब lately become like this कि लोग आते हैं फिर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, कि was it every like this before? But yes, lot of people this season are saying कि ये लोग, बहुत सारे लोग अंदर बाहर गए. What I feel now, when somebody goes out and comes back, firstly he changes a little, some very drastically, and they get a lot of information, so which is not favorable for the people who are already in the house, जिनको बाहर की दुनिया का कोई आइडिया नहीं है. एंड काफी लोग आके गलत फीडबैक जानबूझ के भी देते हैं, जैसे काफियों ने बोला अरे तू तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है. So I think it becomes a little unfair for people who are already inside the house, who Yes. haven't gone out. So but ठीक है, maybe that's the whole idea. I agree with you 100%. मुझे भी बिल्कुल ऐसा weird लगता है कि आप अगर किसी को बाहर जाने देते हो, देख हमारे टाइम पे मैं भी घर के बाहर आया था, पर मैं सीक्रेट रूम में गया था. मुझे वो घर की जो प्रॉपर्टी है उससे बाहर नहीं गया था. एंड आई फील के दैट वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन जो एजाज ने कॉइन किया था, वेपनाइज्ड इंफॉर्मेशन, दैट्स एब्सोल्युटली बैंग ऑन. ऐसे it's bang on. If you're getting that disadvantage, you're getting an advantage going outside and setting up PR, understanding कि मेरी फैन मतलब कितने पानी में मैं हूं या वॉट एवर. अब पता चल रहा है कि राहुल के बारे में जैस्मिन ने साफ साफ बोला है कि तूने तो बाहर इतनी पीआर के ट्रेंड्स करवाए हैं, तेरे तो 5 मिलियन या है, असलियत में 11 मिलियन का ट्रेंड था राहुल के लिए. पर अभी अगर और वो पेड पीआर है, वो तो राहुल ने भी बोला है कि अब मैं पैसे खर्च रहा हूं इसके ऊपर. तो उसने पूरा ये सेटअप किया. पर रुबीना का जो 16.5 मिलियन ऑर्गेनिक है, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? Man, that's pure love, that's pure connection with the people, that's pure that's hard work of people who are following. Whoa, I think we've lost the connection. Hopefully he'll connect back. It might be. Hello?
Yeah, I Abhinav? think I received a call from someone. Yeah, can you hear me? Okay. So I can hear you, but I can't see you right now. So I'm just wondering what that means. And hold on a second. I don't know. It just somebody called and If you abruptly. That's okay. That's okay. If you want to disconnect and connect back, maybe it will. Maybe that will So help. that's what I'll do. That's what I'll do. Yeah, Give just me do a that. I'll add you back in. I'll add you back in. okay. ये है अभिनव शुक्ला, अभी भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी भी वापस आएंगे. ही इज गोना रिकनेक्ट इन अ मिनट एंड वी विल गेट बैक टू आवर अमेजिंग टाइम विद अभिनव शुक्ला. आई होप कि आप सब खुश हैं. मैं तो बहुत खुश हूँ एंड आई थिंक ही इज अ वंडरफुल जेंटलमैन एंड वो इतने मतलब एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं. आई विश के सारे लड़के देखें ये इंटरव्यू, देखें अभिनव की जर्नी और उससे अगर एक दो पॉइंट भी वो पकड़ेंगे तो वो उनके लिए अच्छा ही होगा. क्योंकि आई फील जिस तरीके से इन्होंने ये गेम खेली है, जिस तरीके से वो पेश आए हैं, जिस तरीके से इतना प्यार उनको मिला है. क्यों मिला है? क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं एंड वो उनके लफ्जों से या फिर उनके आदतों से अब हम उनको देख चुके हैं, परख चुके हैं. हमें पता है कि वो किस तरह के हैं, वो और उनका दिल कितना अच्छा है. एंड अगर आप अभी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अभिनव शुक्ला अभी भी हमारे साथ जुड़ेंगे. वो उनका थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, वो फिर से रिकनेक्ट करेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे रिव्यू को उनके साथ. सॉरी, रिव्यू नहीं है इंटरव्यू है. आई थिंक वो अभी आ चुके हैं वापस. आई होप आ गए वापस. Yes. Hello, welcome back, welcome back, welcome Thank back. you. I'm Sorry. so glad you reconnected. No problem, no problem. Of course not. So let's go back to it. Now the thing is, रुबीना अभी भी घर के अंदर है. अभी जो घर के अंदर हुआ है, एक जैस्मिन और उसकी लड़ाई हुई थी. अली ने उनको शट द एफ अप कहा था. बहुत कुछ हुआ है घर के अंदर. अभी उनकी गेम थोड़ी और अलग तरीके से जा रही है. जो आपने कुछ देखा है पिछले एपिसोड्स या नहीं, या फिर आप अभी I भी? just I just saw her arguing with Jasmine and मैंने वहां पे देखना बंद कर दिया. ओह नो नो नो, यू मस्टंट डू दैट. ऐसे मत करो अभी. पता क्यों? अगर आप बंद करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है. आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच इट I will. बिकॉज But या there were a lot of interviews happening, and there was so much, and there was so much confusion. So अभी मैं आज कल मैं बैठ के सभी episodes in sequence देखूंगा since my eviction. So I want to see it like in a go, so that I Yeah, understand but what I'll tell happened. you something. पारस चाबरा ने जाके रुबीना की तरफदारी की है. He is on her Correct. side, it seems, Yes. without Yes. saying. उसने बोला नहीं कि मैं उसकी साइड पे खड़ा हूँ, but he's saying, but he is on her side. We can see that he's playing for her right now. And basically ऐसे हुआ है कि पारस ने बोला है कि रुबीना को कैसे भी उसने जिता दिया. एंड बिग बॉस ने भी 2 बार पूछा था कि कौन जीता है. मतलब बिग बॉस एक बार ही पूछते हैं, इस बार 2 बार पूछा. एंड ये बोला जा रहा है बार बार कि अली और राहुल इतने बड़ी बुली हैं घर के अंदर. वो ऐसे अगर कोई दूसरा होता, जैसे बार बार अर्शी के ऊपर कितनी बुलिंग करके उनके वो अपने डिसीजंस बदल देते थे, यू नो. और पर Correct. Correct. पारस जटा रहा कि नहीं, जो मैंने कहा है वो ही होगा. एंड उस वजह से रुबीना जीती एंड शी वुड हैव गॉन स्ट्रेट टू फिनाले वीक. बट क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, शी इज गोना स्टे. एंड पर उन्होंने निकी को अपने साथ आगे कर लिया. सो जान ने आपको घर से बाहर निकाला और अब वही बंदा रुबीना के साथ खेल रहा है. व्हाट डू यू थिंक? See, Jan, we know Jan very well. वो ना इस साइड Yes, का we है do. ना उस साइड का है. उसको कुछ नहीं पता वो किस साइड का है. और उसको तो लोग बाहर से आके मतलब हाथ जोड़ते रहे, भाई कभी स्टैंड ले लिया कर किसी चीज पे, कभी तो दिखा तू किस साइड है, तू है क्या है. तो उससे एक्सपेक्टेड नहीं है वो कुछ भी करेगा. So I Yeah. don't expect them to have clarity of thought on anything. पर यहाँ पे इस टास्क में अगर हम देखें तो अली और राहुल का अनबन हुआ था, स्लाइटली हुआ था, पर हुआ था क्योंकि दे वर प्लेइंग इंडिविजुअली एक्चुअली. आई थिंक ये भी एक आरोप है एक अली की गेम के ऊपर कि अली ने जानबूझ के राहुल को मदद की थी ताकि वो हारे. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? इज दैट अ पॉसिबिलिटी?
सी फिनाले वीक है, एवरीबडी, हर इंसान अपने लिए सोच रहा है। अगर अगर वो ऐसा शो कर रहे हैं कि नहीं मैं किसी के लिए खेल रहा हूं, तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। बट आई एम 100% श्योर ये हफ्ता हर इंसान अपने लिए करेगा जो भी करेगा। कोई Okay, सैक्रिफाइसेस नहीं होंगे, कोई we सैक्रिफाइसेस haven't नहीं होंगे, spoken कोई about महानता। something. या Rakhi Sawant. We haven't spoken about Rakhi Sawant. Entertainment, entertainment, entertainment. उनकी नॉट एंटरटेनमेंट के माय बारे काइंड में ऑफ आपको क्या एंटरटेनमेंट। राय है? That's what we thought also. Look, at the end of the day, जो हमें बाहर दिखा है कि राखी सावंत is very confused individual, कान की कच्ची है, और पर कहीं ना कहीं उसका दिल जहां पर भी है वो फिर भी अच्छा है, कहीं ना कहीं कालक तो नहीं भरी हुई इसकी दिल में, पर आई थिंक शी जस्ट वो गलत खेल जाती है। पर लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप विद हर, क्योंकि सब कह रहे हैं, सब नहीं, आई डोंट थिंक एवरीवन, बट आई डेफिनेटली एम नॉट, कोई कोई कह रहे हैं कि राखी की वजह से आप दिखे, और कोई कोई कहते हैं कि राखी दिखी है आपकी वजह से, अब आप नहीं है तो राखी भी नहीं दिखती। सो व्हाट डू यू थिंक? सो राखी के आने से पहले भी मैं शो में बना हुआ था, बहुत बार नॉमिनेट हुआ, ऑडियंस ने मुझे नहीं वोट आउट किया। सो व्हाट डज इट मीन? इस पे कॉमन सेंस की मैं दिख रहा था। हाँ, राखी आई, उन्होंने अपना जो एक फिक्शनल ट्रैक चलाया, वो शुरू में इंटरेस्टिंग था, हम भी हंसते थे उस पर, लेकिन वही है कि यू शुड नो योर बाउंड्रीज। ग्रेटेस्ट comedians are the ones, मैं जिनको जिनके जिनकी मैं देखता हूँ stand ups and all, they are so good with the lines which they never cross, and that's the best part of comedy is वही है। लेकिन राखी आई थिंक वो जानबूझ के समझने की कोशिश नहीं करती चीज़ों को, वो जानबूझ के ऐसे शो करते हैं कि उनको पता नहीं है क्या हो गया, हो ये ऐसे हो गया, लेकिन उनको सब पता है। सो दैट्स स्मार्टनेस, whatever you call it, cleverness, and she did cross the boundaries couple of times। मैंने उनको अपने अंदाज में बोला भी, लेकिन फिर जब मुझे लगा कि this is too much, तो that emotional breakdown happened that day। So We yeah, saw that, and we were all upset with you. बहुत सारे लोग आपके साथ रोए हैं उस दिन, तो आप ये मत सोचो कि it was a very big moment, और अगर किसी ने आपको बोला कि there were crocodile tears, just remove it right now because it's nonsense. We saw the real absolutely, person crying, and what not do you feel? correct। मैं तो अपनी eviction पे नहीं So रोया। हर इंसान that's जाने से true. पहले मुख्य द्वार से, या so I didn't cry on my eviction because what happened with Rakhi was, which actually hurt me. I was never hurt in the show. I was angry at few people. I was indifferent with some people, but nobody. I did not allow anyone to hurt me. वो सिर्फ एक इंसान ने किया, तो इसलिए मेरा ब्रेकडाउन हुआ उस दिन। अभी तो ये बहुत जरूरी बात है बोलना कि गंदी औरत और ठरकी, इनमें इनमें ये क्यों तुला क्यों हुई थी कि कौन सबसे, ये कौन सा वर्स्ट है, कौन सा अच्छा, ये तुला हो सकती है क्या? ये इक्वल तो नहीं है? लाइक ठरकी मींस परवर्ट, एंड गंदी औरत मींस डर्टी वुमन, एंड लाइक वो तो बच्चों को भी बोल देता है कि आप गंदे हैं, सो इज दैट रियली वर्स देन ठरकी एंड द वे शी वाज सेइंग इट? Honestly, man, how can you compare both? But yeah, I don't want to talk about it much because I that, know you don't. yes, it's how you can't It's cheap. compare. Yeah. It's cheap talk. I know, but we had to bring it up because it's something that a lot of people are asking, and I want to just air this out so that there's no bad air there anymore, so that it's fresh. So the thing is, I'll tell you something that I'm seeing. ये जो तुला करी गई, बार बार आपको बोला गया कि and little finger being middle finger, all this is kind of, I think, nonsensical. It doesn't make sense, and when something doesn't make sense, it's usually crap.
Let's be honest. So, so, and the thing is, बाहर जो भी है, उनको दिख रहा है जो असलियत है. So, Abhinav, we are with you. Trust on that. There are a lot of people, millions of people across the world who are with you on these points. So but I'm bringing them up because I want to make sure that you understand that we are with you Yes. on these things. So it's clarified. It's out there. Hmm. Now, the thing is, Rubina और अभी अभी देखो, let's talk about ये जो गेम में अभी राखी ने किया है. राखी ने 14 लाख रुपए प्राइज मनी से कटवा दिए क्योंकि उनको फिनाली वीक में जाना है. कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो फिनाली में पहुंच गई हैं. आई थिंक घर के अंदर भी ये उनको समझ नहीं आ रहा कि फिनाली वीक पहुंचना मतलब इफ यू डोंट गेट एलिमिनेटेड, यू आर इन द फिनाली वीक. That does not Correct. mean you're not in the finale. There's a Yes. difference. You can Absolutely. still leave. So do you think जायज था कि 14 लाख ऐसे खारिज कर दिया प्राइज मनी से? See, जहां से मुझे लगता है the task was designed like that कि the person who's very confident that I'm going to win would have a problem with the one who knows that he can't or might not win यार, और maybe chances हैं नहीं है, पैसा तो ले लो, आगे तो एक हफ्ता आगे तो बढ़ जाओ. So, you know, the task was meant to bring that out. That who thinks मैं तो पक्का हूँ भाई, मैं तो जीतूंगा, है ना? So I haven't seen the episode, so I can't comment much on it. But see, मुझे यही लगता है. And because I remember when Ali and me in the pre-finale week we were discussing, so Ali was saying, यार मैं तो पैसा आया उठा लूंगा. So somehow he was like he was convinced that uska chances of winning are 50-50 between him and Rahul. He sees Rahul ahead of him. So I think it's वही every man for himself in this week. So हर बंदा अपनी सोचेगा. अब ज्योतिका भी घर के अंदर है एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि आप घर से आए हैं और ज्योतिका वहां पे है. ये एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए रुबीना के पास. पर जिस तरीके से ज्योतिका ने बहुत बार मतलब पाइप अप करके बोल दिया जो बोलना है उसको. And I think that in fact I also had her on the show, so I've spoken to Jyotika, so I know a little bit about her. Obviously not as much as you guys. I know a little bit about her. She's very sweet, cute, very well thought out girl, and she's very level headed. तो घर के अंदर जो वो अब कर रही है तो वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कोई ना कोई तो बोलना चाहिए. जहां पे बाहर की बातें होती हैं, बोला जाता है रुबीना को कि बाहर तुम देखना तुम कितने पानी में हो. मतलब इट्स लाइक एक सेकंड जैस्मिन, अरे भाई कितने I've पानी seen में. that Pani. Yes, I've seen that Pani. The nation is loving her. The people all across the globe are loving her. There's so much support for her, and it's pure organic because we know it. So it's like it's mind blowing. I hope when the moment she comes out, she sees what is going on. It's the people are in love with her. So Pani mein kaun No, se Pani they're mein, in I don't know love. what it is. They're in love with you guys. They're in love with Rubina, yes, but Yes. they're in love with Abhinav Yes. also. And Yes. Abhinav, they're in love with Rubinav. The hashtag Yeah. Rubinav. They're in love That's with right. you guys. And you guys have done so well. If you win, you don't win, you've won. You've won, Abhinav. Trust me, you are one of the winners of the season because खास करके ऐसे होता है सीजन्स में जो जीतते हैं ना वो शायद इतना वो नहीं कर पाते बाद में. मुझे पूरा यकीन है कि आप और रुबीना इतना काम करोगे, आप इतना अच्छा आगे बढ़ोगे क्योंकि लोगों का जो ऑर्गेनिक प्यार आपके साथ है ना वो जुड़ा रहेगा सालों तक. Yes. देखो मैं आई एम Yes. स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. आई डिडंट विन. Correct. आई केम आउट ऑफ द हाउस मिडनाइट 5th place without votes. They removed me. But I feel the love every day, even now, 7 years later. Every day. Correct. So trust Correct. me, you are in for a big journey now, a big roller coaster of love and pureness and success. So just keep your head up, okay? And just feel that love. And if anytime you feel dizzy, just sit down, recuperate, and then feel the love again because you're going to have it for Exactly. lifelong. Trust me. Exactly. That's But see, that's what I say. The best part of the journey is the journey itself, because it's not the a destination. It's always the journey. So I'll remember each day spent in Bigg Boss, and the best part of Bigg Boss was it helped me and Rubina
our bond became like very strong comparison to when we went in. So for me, I see at the brighter side of life. So dekha jaye to Bigg Boss has helped us tremendously. It's a brilliant Yes, format. yes. It is really, and also what it's done is that, it's shown the world that you can have problems, but if you can work together and if you can keep a Yes, positive mindset, you can achieve anything. That's correct. what Big And Boss says to me. I don't know if it has come across, but I was highlighting a lot of incidents happening inside the house and drawing a parallel with things happening outside the in the outside world, because for me it was very interesting that how things happen inside the house, how there is a parallel always. That situation has some sort of resemblance to what is happening outside in the outside world. And I always used to highlight it because even from the audience point of view, I thought it would have been very interesting. So a lot of parallels you see inside the house, the problems which happen, the issues which occur. So it's a good learning when you solve them. And I just said that I'm going inside as a problem solver. So it's very interesting to see human behavior, human emotions. So I think let's talk about who is your who is your top five. My top five are already sitting there now. They might be sitting there. They So are yeah, sitting there actually already. But yeah, so so we know, but so Nikki, hmm. Rahul, Ali, uh, and Rubina. who else? I wonder. Rubina, really? Rubina, that's top four. So who's the fifth? Yes. Raki? Is Raki top five? I think it would be between Raki and Devalina, but mostly Mm, Raki would be there because yeah, Ijaz hasn't returned, so I don't think that Devalina would stay. I think yeah. she'll get out. I mean, we haven't even spoken about Devalina, but I don't even want to talk about her because her game is so random and strange, and I don't even think कि कोई proxy ऐसे आना चाहिए. It doesn't make sense. It doesn't make sense to me at all. So I'm not even bringing it up. But so obviously, आपका मानना है कि रुबीना जीतेगी. Absolutely, absolutely. Fingers crossed. I pray. I want her to win. That'll do justice to Vote me. for. Vote for, Rubina. vote for Rabina, vote for Rabina, vote for Rabina. So, Abhi, are you going to do anything special to make sure people keep voting? Like, is there any plans? See, there's no plans, but yes, I'm going to be more proactive now on social media, which I wasn't. I was just finishing a lot of interviews and a lot of work calls, and there's a lot of confusion. So I'm just going to now, get hold on to my social media, and let's support her. Let's do So, whatever we can. have you heard the Rubina anthem? Sorry, the Have you heard the Rubina anthem song? yes, I heard. Yes, somebody had made it. It was brilliant. I Roach mean, there's so Killer. many His name creative. is Roach Killer. Yes, there's so many creative people in this world. They make amazing stuff. Like I get inspired by how people make. It's brilliant. I mean, Rubina's song is absolutely excellent. It's such a good Yes, song, yes, just on yes. its own, without it being about Rubina or Big Boss. But it's a good song in itself. I actually interviewed him as well, so you can watch his interview because he talks I about will. Rubina so wonderfully. And I will. now that song, I think, is going to become quite big on its own. It already has. It's gone viral, and Hmm. I think there's other people like Rohit, who does all those videos, who did Raki Sawant's Yeah, video. yeah, He's yeah. done one on Rubina now. So, so people are now gearing up for Rubina's win. So now is that time where we gear up. I'm also gearing up. I'm going to be a part of all the trends. I'm just saying it out. Let's do it. And everyone keeps saying, because I'm also reviewing the show, but I am very, very biased and I'm being honest about it. I have my winner in mind, and Rubina's the one. So we vote for Sure, sure. Rubina. Like, if anyone's Let's watching do the it. show right now, and please go ahead and vote for Rubina. Um, let's take a little bit of Absolutely. questions from the fans. There's so many people here. I mean, we've got, look, all the love coming in. We've got Andy, loads of love. Andy, there's a request. I had another interview lined up at 3. So how much Okay, time done. would this take? I Any think I idea? think just 5 minutes. 5 minutes. Literally 5 minutes, and then we're Okay, done. let's quickly finish it.
Done, Yeah. done, done. Right, we've got questions coming in now, so let's have a look. Where are these questions? I've got to find them, obviously. So we've got 16 million love, Abhinav, we love you. So we've got all of that going on. I mean, there's too much. आपका सेब का तो मतलब अलग ही अंदाज है. मतलब आपके सेब खाने का अंदाज जो लोगों को पसंद आया है. वाह. Briva Dave says, Abhinav, I love you so much. It's like 5 a.m. right now. I literally just woke up to catch you live. You are wonderful and deserve finale. Rubina for the win. Wanted to see you both on stage. See, look, there's just too much love for you guys. Ria Bad Kamkar, Absolutely. from Kavita to Raki, the more they accused Abhinav, the more he shined out brighter. More power to you. Would cast Wow. someone from BB14 in film Abhinav. Would you cast anyone in a movie Yes, that you're gonna? I Are you found. gonna direct movies? I am, and I think I found an amazing character, and that's Arshi. Arshi is, I won't write. I will actually write her in the film. She is brilliant, and there are other people as well who are like very good, but Arshi is the first choice. She is amazing. She's such a She, funny person, but in the house, she yeah. went off on other tangents and all. But she has a good heart. That girl, you can But see you know that. what? Um, Out of all the contestants, she was the only one who was good, but was trying to show that she's not all that nice. She used to say, "हाँ मैं तीली लगाती हूँ, मैं आग लगाती हूँ." So such people are like yeah. straightforward and they have clean heart. I mean, you could tell when her brother came and they were so funny. You were like, this is her asliyat. Yes, You know what I mean? correct. So Neha K says, Abhinav, love from sunny California. You are a true winner and a real man. We want to see you more on vlog, social media. Please come visit Cali. You're Will being invited to will do. California. Yes. Tusi chale jo the, chalo. Mashira C, welcome. You are a winner to us. Thank you so much to come here. Love you so much. Like, अभिनव आई कांट इवन टेल यू कि जब मैंने ये शुरू किया ना ये एंडीज रॉयल्टीज का आज का एपिसोड, इस पे इतने लोगों ने कमेंट ऑलरेडी ही कर दिया था, शायद 1 घंटे से कर रहे थे जब मैं आया था. मतलब देयर सो मच लव यू. मेरा इंस्टाग्राम पे जब उनको पता चला कि आप आ रहे हैं इस शो पे, they were all just lining up around the corner, just get the messages across. That's why I want to just maximum just try and get people messages. For me, top 2 Rubina Abhinav, one word, Abhinav gentleman. So there's so Thank you. much love for you guys. And I know. I know. there's Nirali Patel says, hi Abhinav, lots of love, hugs from San Francisco. You're a winner for us. I couldn't digest your eviction. You're true gentleman and love your Thank you smile. So so like much. there's so much. I Amruta know. I know. Nadar says, Abhinav, now there won't be any able to see you every day. Please be active on social media. Keep us updated. We love you. So, I think we've lost him again. Oh no. Abhinav. I think he's been called, guys. He's been called. Guys, I think that's everything from Abhinav and I, because he had another appointment. And I'm sorry if I missed any of your messages. But unfortunately, he's back. He's back. How sweet. What a sweet man. Oh, you're such a sweet man for Sorry. coming back. I mean, this is the moment. Prakar Shrivastava says, loved your game, Abhinav. Aram Masak says, hi, Abhinav. What makes we love you and appreciate you and Rabina's relationship? Amruta Nadar says, Abhinav, please be active every day. I I'm will. just giving you all of them. Ria Yes. Badmarkar says, yeah, we love you so much. Like this, look, all of them. Briva Dave says, Abhinav, love you so much. Like, it's just basically, Abhinav, you are the most loved contestant from the house, other than Rubina as well. And together, you guys are probably like, you are the epitome of, goodness and achai ki jeet. तो Rubina ही जीतेगी, Rubina ही जीतेगी, और अगर Yes. Rubina नहीं जीती, हम किसी को जीतने नहीं खराब देंगे. कर देंगे. हाँ हाँ हाँ, अली हम का गेम टास्क रद्द पकड़ेंगे. करवा देंगे. रद्द रद्द करवा करा देंगे. देंगे. हम बिग बॉस रद्द करा देंगे. Well, thank you Man. so much. Thank you, Andy. I thank you so much that I took a long time from you, but I knew the fans want to hear everything, your full journey. It's been an epic journey. You are so loved. Any last words for the fans before you go? Last word is that I am what I am because of you guys. Please keep writing to me.
Please keep commenting. Please keep the love and the appreciation coming my way. It's too much to take in right now, because I never thought I would have so much of love, so much of appreciation. uh, but keep the faith and now support Rubina. This is the time. This is exactly the time we need to go all out and support her. So thank you so much. Yes, Thanks, absolutely. Mary. Oh, I think